Good morning, everyone. So today's topic, as you can see on the board, is examination of cardiovascular system. Now, before starting, we should understand that in any kind of systemic examination, matlab clinical examination of any system, there are few pointers that you need to go through. So, ये right on day one from your first year of medical college, you need to understand this clinical examination scenario. So, number one is inspection. Number two that you do is palpation. Number three is percussion. Number four is auscultation. So we'll go sequence by sequence. Number one, inspection means किसी चीज को देख के ऑब्जर्व करना, to see and observe the findings. Number one, inspection. Number two, palpation. Palpation means to touch and feel, to touch the respective part and feel. This is palpation. Third is percussion. Percussion means to tap and listen and observe the sounds created. And number four, auscultation means to auscultate, means to listen, right? तो यहाँ पे हम आज बात करने जा रहे हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. तो नंबर वन, यहाँ पे इंस्पेक्शन में आप क्या क्या देखेंगे? इन इंस्पेक्शन यू कैन लुक फॉर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की. जब हम बात कर रहे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड टू टर्म्स, प्रीकार्डियम एंड पेरिकार्डियम. सो प्रीकार्डियम मींस द एरिया ऑफ चेस्ट वॉल दैट इज covering the heart, that is called the precordium, and pericardium means the outer covering of the heart, correct? So precordium, जब आप chest wall को examine कर रहे हैं, so when you look to the patient's chest wall, आप inspection में first क्या देखेंगे? You can look for the cyanosis, मतलब the bluish discoloration of the skin. तो आप chest wall को expose करके उसको skin का color देख सकते हैं. स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पे कोई साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं है. नंबर टू, यू कैन लुक फॉर डिस्निया. आपको देखने से पता चल सकता है दैट पेशेंट इज हैविंग एनी ब्रीदिंग डिफिकल्टी और नॉट, ब्रेथलेस है या नहीं है. नंबर थ्री, यू कैन लुक फॉर द शेप ऑफ चेस्ट और द फॉर्म ऑफ चेस्ट, राइट? अगर कुछ डिजीज पेशेंट होगा उसमें शेप्स कैन वेरी, अदरवाइज इन अ नॉर्मल हेल्दी यंग इंडिविजुअल द चेस्ट शेप विल बी सिमेट्रिकल बाइलेटरली. शेप ऑफ चेस्ट हो गया. देन यू कैन लुक फॉर, और क्या क्या देख सकते हैं आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में? यू कैन लुक फॉर द वेन्स इन नेक, नेक वेन्स यू कैन लुक फॉर. और क्या देख सकते हैं आप? यू कैन लुक फॉर द जुगुलर वेन्स, राइट? एंड यू कैन लुक फॉर द कार्डियक इंपल्स और एपेक्स बीट. इंस्पेक्शन में आप साइनोसिस देख सकते हैं, डिस्निया देख सकते हैं, वेन्स इन नेक को देख सकते हैं. कोई प्रोमिनेंट वेन्स तो नहीं है. वेन्स इन चेस्ट वॉल, यू कैन एंटर दिस इनटू द जुगुलर वेन. वेन्स इन नेक लाइक जुगुलर वेन एंड वेन्स ओवर द चेस्ट वॉल. यू कैन लुक फॉर वेन्स ओवर द चेस्ट वॉल, राइट? जुगुलर वेन्स में क्या मिलेगा आपको? इन अ डिजीज पेशेंट जुगुलर वेन आपको नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में प्रोमिनेंट जुगुलर वेन नहीं दिखाई देगी. इन अ डिजीज पेशेंट यू कैन लुक फॉर जुगुलर वेन्स अलग से प्रोमिनेंट फील होगा आपको. कहां पे? इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द नेक, राइट? देन वेन्स ओवर चेस्ट वॉल, एनी प्रोमिनेंट चेस्ट वॉल वेन्स तो नहीं है. एंड यू कैन लुक फॉर कार्डियक इंपल्स और एपेक्स बीट. कार्डियक इंपल्स क्या होता है? द इंपैक्ट ऑफ हार्ट अगेंस्ट द चेस्ट वॉल जो मिलता है ड्यूरिंग द सिस्टोल, मतलब जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसका जो इंपैक्ट हो रहा है अगेंस्ट द चेस्ट वॉल, वो इंपैक्ट इज विजिबल एक्चुअली, दैट इज नोन एज कार्डियक इंपल्स. एंड द लोएस्ट एंड द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ दैट कार्डियक इंपल्स, जहां पे वो सबसे ज्यादा फोर्सिबली दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द एपेक्स बीट. यूजुअली ये कहां मिलता है आपको? 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन और 1 सेंटीमीटर इंटरनल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन. If you draw a mid-clavicular line, you will find it 1 centimeter internal to the mid-clavicular line in the left fifth intercostal space, right? This is about the inspection. Now, you confirm your findings of inspection in the palpation where you touch and feel. Palpation. Palpate आप क्या क्या करेंगे? इन्हीं चीजों को palpate करेंगे. So palpation you use by the flat surface of the fingers or your palm, right? तो पैल्पेशन में आप बहुत जेंटल बट फर्म प्रेशर अप्लाई करते हैं टू कंफर्म द फाइंडिंग्स ऑफ योर इंस्पेक्शन. पैल्पेशन में आप क्या क्या चीजें करेंगे? यू विल कंफर्म, यू विल लुक फॉर द texture, skin texture of the chest wall.
स्किन टेक्सचर ऑफ चेस्ट वॉल को आप कंफर्म करेंगे, और क्या क्या देखेंगे आप, कार्डियक इंपल्स को आप फील करेंगे, कार्डियक इंपल्स और एपेक्स बीट, एंड you will confirm the neck veins, right? You will look for the neck veins. Third, you will do percussion. Percussion में क्या क्या हमने बताया अभी, you tap. Percussion कैसे करते हैं, you will use this hand, like let's say on the chest wall, you will keep this middle finger over the part to be percussed. Rest all the fingers will be spreaded out and should not touch the surface. Then with the right hand, again using the middle finger, you will use this kind of tapping. Now this movement has to be over the wrist. It will not be movement over the elbow. ये ऐसे टैप नहीं होगा, ये इस पे मूवमेंट इस पे होना है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन का, and you will tap like this, right? So this is the percussion. Percussion में क्या मिलेगा आपको, यूजुअली क्या होता है, अगर कहीं सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट फ्लेशी मटेरियल है या फ्लूइड है अंडर पाम इन द बीनीथ, तो आपको कैसा मिलेगा, इट विल बी डल। और अगर कहीं एयर ट्रैप्ड है बीनीथ द हैंड, तो क्या मिलेगा आपको, रेजोनेंट, इट विल बी क्लियर साउंड, क्लियर टैपिंग साउंड, रेजोनेंट, राइट? ये हो गया परकशन का। एंड फोर्थ विल बी ऑस्कल्टेशन, where you will listen. Listen का मतलब आपको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, listen with the help of a stethoscope, जिसके बारे में हम लास्ट रिकॉर्डिंग वीडियो में बात कर चुके हैं, how to use a stethoscope. तो यहाँ पे आप ऑस्कल्टेट करके over the chest wall और the chest piece को प्लेस करके आप क्या क्या सुनेंगे, you will listen to the heart sounds, heart sound 1 and heart sound 2, ये आप सुनेंगे, and you will also look to listen some additional sound is there or not, there is some murmur or not, right? तो हार्ट साउंड्स कितने टाइप की आपको हार्ट साउंड 1 and 2 सुनाई देगी, कहाँ सुनाई देंगी, इन एरियाज को आप परकस करेंगे, पैल्पेट करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, उसके लिए you should also have an idea about the precordium. The chest wall कुछ इस तरीके से डिजाइंड है, for example let's say if I draw, let's say this is the sternum, right? This is the clavicle, fine? This is the manubrium sterni, the sternal angle, right? यहां से फर्स्ट रिब तो हमारी behind the clavicle disappear हो जाती है, बट यहां से जो आप सेकेंड रिब ये लेंगे, थर्ड, फोर्थ, fifth rib, and so on. So let's say this is the right side and this is the left side, right? तो अगर कुछ इस तरीके से है, and if I draw the mid clavicular line, right? Now you should understand how to inspect, how to palpate the intercostal spaces. So this is the second rib, so second intercostal space, third rib, third intercostal space, fourth rib, fourth intercostal space, fifth rib and fifth intercostal space, करेक्ट? तो यहां हम बात कर रहे हैं कुछ एरियाज की। एरियाज कौन कौन से मिलेंगे आपको जहां आप हार्ट साउंड्स सुन सकते हैं, mitral area, tricuspid area, aortic area and pulmonary area. So mitral area will be in the fifth left intercostal space, just at the mid clavicular line. This is the mitral area, correct? Tricuspid area will be just left to the intercostal, just left to the sternum, the midline, in the left fifth intercostal space. Aortic area will be towards the right side, right second intercostal space, just 2 centimeters away from the sternum, and left second intercostal space somewhere here 2 centimeters will be the pulmonary area. So aortic area, pulmonary area, tricuspid area and mitral area. These are the areas that you should already know. Only then you can go ahead to do your examination, right? तो इसमें अगर हम कार्डियक इंपल्स की बात कर रहे हैं तो इट इज 9 सेंटीमीटर्स इन द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस और 1 सेंटीमीटर इंटरनल। तो कहीं ना कहीं द एरिया ऑफ निपल इज देयर, वहां पे आप कार्डियक इंपल्स को फील कर सकते हैं। ऑस्कल्टेशन के टाइम पे हार्ट साउंड 1 एंड हार्ट साउंड 2 आर प्राइमरीली हर्ड ओवर, मेजरली हर्ड, बेटर हर्ड ओवर mitral area and tricuspid area, and heart sound
heart sound 1 is heard majorly over mitral and tricuspid, and heart sound 2 is heard mainly in the aortic and pulmonary area. They are better heard in these areas, otherwise they are heard over the entire chest wall. Now इनका reason क्या है? So heart sound 1 and heart sound 2, let's say हम ऐसे बात कर लेंगे, heart sound 1 and heart sound 2. तो heart sound 1 is, पहली बात तो इनका cause क्या है? तो this is due to the closure of AV wall and this is due to the closure of semilunar wall. ये क्या mark करता है? It marks the onset of ventricular systole and it marks the onset of ventricular diastole, right? So closure of AV wall, closure of semilunar wall. This is low pitch sound, loud, longer in duration, which is 0.1 to 0.17 second, and it creates a lub-like sound, lub. Whereas heart sound 2 is shorter in duration, 0.1 to 0.14 seconds, high pitch, right, and it creates a duck-like sound, right? High pitch, sharp sound, and shorter in duration, sharp sound and shorter in duration, and it creates duck-like sound. This is heart sound 1 and this is heart sound 2. So closure हो गया, cause हो गया, onset of ventricular systole, onset of ventricular diastole, right? This is about the heart sound. Heart sound 3 and 4 are also there, which are not normally heard. Abnormal filling pattern of ventricles जब भी होगा, वहाँ पे heart sound 3 and 4 will be audible, right? So this is about the examination, clinical examination in terms of inspection, palpation, percussion and auscultation. कैसे करना है एक बार हम डेमो आपको दे देते हैं. So in view of the weather conditions, I am not exposing the part to be examined. Otherwise, there are few ground rules that you should follow while doing any kind of examination. Number one, you should be on the right of the subject or the patient in terms of clinical cases. And then the part to be inspected or the part to be examined exactly should be entirely exposed. So in this case, while doing the cardiovascular examination, this entire area should be exposed completely, right? So there should be no clothing up to the waistline, ideally. But looking at the weather conditions, I am not able to do that with this subject. So I'll just tell you superficially, make him sit, relax and comfortably, explain him what you are going to do in prior, right? So inspection. While looking at the chest wall, you should look for the dyspnea, there is no breathing difficulty, skin coloration, cyanosis, you can look for the shape of the chest and you can compare it bilaterally. Then there should be no prominent veins in the neck, you should look for the veins. You should look over the veins over the chest wall, and then finally you should look for the cardiac impulse, right, somewhere near the nipple here in the. Now this you should know that if this angle, this sternal angle, if you can feel and you can feel the clavicle, then there is a second rib after that, second intercostal space, third rib, third intercostal space, fourth rib, fourth intercostal space, fifth rib, fifth intercostal space. This is how you should be able to learn, and this is an art of practice. You should be able to learn how to check the ribs and the intercostal space. Only then you will be able to figure out where and exactly what is located. So to know the extent, to know the location, you should be able to do all this. So this is about the inspection, just to see. Palpation, skin texture कैसा है, cardiac impulse कहाँ है, and you can feel the prominence of the neck veins or the veins over the chest wall. Right? Percussion में again, percussion में यहाँ पे क्या होगा? You have to look for the borders of the heart. तो left border of the heart आपको कहाँ मिलेगा? Approximately 1.5 centimeters internal to the mid clavicular line in the left side of the chest wall. Right? कहाँ left side of the chest wall वो नहीं मिलेगा आपको? Where it will be dextrocardia. Then it can be seen on the right side. तो cardiac impulse भी आपको उसी के according मिलेगी. Right, so left border, right border will be just right to the, it will be somewhat like this. This you can look for the borders of the heart. So upper and lower border of the heart will not be percussed. क्यों? क्योंकि upper border of the heart का जो lination है, that will be in the continuation of dullness of the heart borders,
and lower border will be in relation to the diaphragm and the left lobe of the liver beneath it. तो अपर बॉर्डर और लेफ्ट लोअर बॉर्डर आपको परकशन उतना कंफर्टेबली नहीं मिल पाएगा, बट लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट विल बी 1 centimeter internal to the mid clavicular line and right border will be just right to the sternum in the left intercostal space. Right? This is about percussion. Auscultation में you know the use of earpiece, how to put this, and then you use that, right? Then you use the chest piece over these areas that we talked about: aortic, pulmonary, mitral, and tricuspid. Right? Now mitral area, right? So you listen to the sounds like this. Then in the second, and aortic area. So aortic area, pulmonary area, tricuspid area, and mitral area. Now, if it would have been exposed completely, then it would be better to understand. But you should know this, how to do it. Rest, you will do it on the practical basis. Now, this is about the inspection, palpation, percussion, auscultation. Clinical area is covered. Other than this, examination of radial pulse is also included in this, and examination of recording of BP is also into this. Recording of BP we have already discussed. Pulse recording, you can do this in semi-prone position and semi-flexion at the wrist joint with the use of 3 fingers, index finger towards the heart. You place it like this and you count for continuous 1 minute. Right? Index finger towards the heart, middle finger and ring finger placed over the underlying radial bone. You feel the tapping of this waveform that gives you the pulse rate. So in those terms you will calculate the rate, rhythm, character of the pulse and synchronicity towards both the sides. So this is also a part of cardiovascular system examination, but majorly you need to understand the inspection, palpation, percussion and auscultation process. Okay, so that is all for today, and you can leave. So whenever you will be required to do this examination, any kind of systemic examination will be covered in these headings only: inspection, palpation, percussion and auscultation. Cardiovascular system will require all these things. Rest in the details you can go through your books, and you can do it practically when available on your subjects. Thank you so much.